Now we are going to have a straight talk with the eminent advocate of our state who has been socially recognized for his relentless effort for the LGBT community, and he is also the legal advisor to the LGBT community. He is none other than Advocate Ivo Milisa. Sir, we have a straight question from the Arunachal Informer and MPL News Live. Sir, just recently we have seen one occurrence, that is one FIR has been registered pertaining to the sexual assault, and it is related to gay dating. Yes. That employee who belongs to Border Road organization has reportedly sexually assaulted a guy whom he was dating with, and accordingly it was realized that that guy was already in relationship, he was already married. On knowing that reality, that guy, a 23-year-old who is a victim now, he de-affiliated their relationship. Now accordingly the case has been registered, and it is for the first time in our state, in Arunachal Pradesh, such cases has been witnessed. So you being the first person to comment on the commendable effort of the OC in charge of Naharlagun Police Station. So you being the cardinal member of Human Rights Law Network, so what do you have to say on this case? Yeah. So this case is actually quite old. We had it filed in the month of November. So I got a complaint since I'm with the LGBTQ members with the team, and जो भी law issues होता है, if because they are a marginal community. So at times in these kind of communities, what happens कि they public पे they cannot come out their relationships. तो उस basis पे क्या होता है कि exploitation बहुत ज़्यादा होता है. तो we got a complaint. So I drafted the complaint letter, and then I spoke to the other members now. So we had a meeting, and then Sawang Wangchha, he's the one, he's the activist here now. तो वो सबको देखता है. So whatever the problem that comes, he has to listen, and then he gives it to me. So we got the complaint, we drafted it, and then we had it filed in the police station. But then क्या हुआ था कि there was an incident जहाँ पे one of the police personnel, he was very insensitive to this matter, and started making jokes and things. No, so I had written a letter to the DGP last time about this, and then fortunately we had this Taku madam. She's the IO of this case. तो she was very sensitive. तो उसका वजह से आज का दिन जो मिल रहा है ना arrest, that is only because of her sensitivities. So we were happy about this, and कल ही पता चला कि that BRO person, he was arrested, and of course this was a mutual, they got in a relationship between them because of the gay app. लेकिन gay app पे उनको झूठ बात बता के उनको फंसाया गया था, तो उस पे exploitation हुआ है, तो this kind of things ना, so basically these are criminal this one acts. So okay, that's a punishable leading under criminal offenses. Yes. So will also that attract that back promises? Yeah, see, actually अभी तो 377 हटाई गया, तो it's up to the court now to explore about this. Interpretation बड़ा vast होता है. Whatever the section says, it can be interpreted in many other ways. So depending on that, whatever the section attracts, अभी फिलहाल तो 2 ही sections है, but then if the court deemed fits, then there will be extra more added. Yes, sir. Sir, when we speak about LGBT community in our state, be it in other state also, our society is very much reluctant to embrace them as a human being. Yes. They do not consider them as a real human being. Whenever they listen, they perceive them as a third-class citizen. Sometimes they are not even treated like a human being, because whenever cases rises, they mock them, they make fun of them. So you being the leader or the member of Human Rights Law Network, because Human Rights Law Network is an association which deals to ensure equality irrespective of their community, their gender, all this thing. So what do you have to say on this society's stigma toward the LGBT community? Yeah, because that's how we were brought up, the way that our social norm works. We've been told there is man and there's a female, no?
and the relations needs to be opposite sex. But then it's history has witnessed about this about the homosexualities and other LGBTQ members ना their existence, तो उनको छुपाया जाता है क्योंकि the family does not want to know, family ये चीज़ को avoid करता है. Even the person who is going through, the girl, the boy, whoever, the trans ना, इन लोगों के ऊपर भी एक ये सोच को engineer करके रखा हुआ है कि if you want to exist you'll have to be following that norms, social norms. yes, the social norms. तो इस बेसिस पे क्या होता है कि in order to ये चीज़ को normalize करने के लिए they sacrifice a lot of things. तो ये चीज़ को हम लोग को बताना है दुनिया को ना कि they exist, they've been existing since quite long, or we shouldn't impose whatever or however they identify themselves. Okay, sir, you being the member of Human Rights Law Network, what message would you like to convey to the society? Because society are still reluctant to accept their existence, like you have already stated. So what would be your message to the society? My message to the society is we are all human being, और हर इंसान को अपना हक बनता है जैसा जीना ना. You cannot objectify them. You cannot pass judgment on them, no. Especially to the family members, be little sensitive. आपका ही अपना बच्चा है ना, द औलाद है, तो उनका जो चीज़ गुजर रहा ना, फैमिली स्टैंड करता है तो दे कैन स्टैंड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. इफ द फैमिली डज नॉट, देन बहुत ख़राब हो जाता है उन लोग के लिए. सो देयर वुड बी माय मैसेज टू द होल वर्ल्ड. Sir, now it is already into your acknowledgement that the Bharatiya Janata Party, who is running the parliament, now the Bharatiya Janata Party already included uniform civil code in their manifestos, but it couldn't be implemented in toto due to certain conditions, because India is known for unity in diversity. Certain cultural practice, tradition practice are vary from state to state. Now it seems that the uniform civil code become a top priority for the Bharatiya Janata Party. So it possibly there may be in toto implementation of uniform civil code across the country, India. So you being an advocate, what would be your ideas or suggestion on this in pretext of Arunachal Pradesh? Yes, in pretext of Arunachal Pradesh, no. First of all, I'm a tribal. I'm an Idu Mishmi from Arunachal tribe. So what I see, UCC, first we need to understand the Constitution says our country is a federalistic character. That means federalism है इस पे. So federalism does not mean कि look at other countries ना. If they are federalism country, what happens कि उसका अपना अपना कानून रहता है. Say suppose you take United States, they have I don't know how many states, they have more than 40 or 50 states. But each states have their own laws. Unlike here, we have a constitution, we have a IPC, CRPC, CPC, right? लेकिन क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको एमलगेट कर देता है. तो उस एमलगेमेशन में क्या होता है कि जो स्टेट्स ना which are protected, say I'm scared from Arunachal, I'm scared from North East because we are minority. तो we don't have a say on this majoritarian government. तो UCC एक ऐसा एक टूल है जो हम लोग को यूनिफाई करता है. द लॉ गेट्स यूनिफाइड. इट्स ईजियर फॉर द लॉयर्स टू फाइट बिकॉज एवरीथिंग इज यूनिफाइड. यू डोंट हैव टू रीड अदर बुक्स. लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका माइनॉरिटी का जो आइडेंटिटी होता है वो ख़त्म हो जाता है. तो अभी हम लोग का अपना लॉज है, कस्टमरी लॉज है, उसको द कोर्ट डज नॉट डिनाई बिकॉज इट्स बीन एग्जिस्टिंग सिंस टाइम इमेमोरियल. आवर ट्राइबल, आवर फोर फादर्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट. लेकिन क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये चीज़ नहीं देखता है. और शायद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता है, दे फॉरगॉटन कि इंडिया हुआ नहीं करता था. इंडिया का जो परिभाषा था, डेफिनेशन ऑफ इंडिया वाज वेरी डिफरेंट. वी वर नेवर पार्ट ऑफ दीज थिंग्स ना, द पॉलिटिकल थिंग्स, जियो पॉलिटिकल्स व्हाटएवर वी से. उस समय हम लोग को नॉलेज नहीं था कि कंट्री का बारे में क्या था. सडनली सम ब्रिटिशर्स केम, दे स्टार्टेड सेइंग कि दिस टेरिटरी इज द पार्ट ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ जो भी है उनका उसमें आता है. एंड देन दे वेंट आउट, इट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. लेकिन क्या हो कि दे नेवर टूक अ कंसर्न कि हम लोग क्या चाहते हैं. तो जब हम लोग हमारे जो फोर फादर दे स्टार्टेड स्टडिंग, दे केम टू नो ना
कि सडनली आए हैं. So we are proud that we are part of India, but then these majority people, they should respect us, ना, our identity. तो हमारे आइडेंटिटी का अपना रूल से वी आर फॉलोइंग IPC, CPC, CRPC. काफ़ी नहीं है कि उन लोगों वो लोग क्या कर रहा है. दीज आर बिकॉज वी नो वी कैन डिनाई द फैक्ट दैट सेफ्रोनाइजेशन इज गोइंग ऑन. तो वो UCC इज वन अनदर स्टेप टू गेट दिस सेफ्रोनाइजेशन. वो जो अखंड भारत बोल के जो करा रहा है ना, तो दीज आर द थिंग्स. तो आई से फॉर मी, नॉट एज अ लॉयर, I'm saying because I'm a tribal people and I see the danger in it. Yes, sir. If Uniform Civil Code is implemented in our state, then this whole VFR Act will be abrogated, it seems, and our this culture, tradition will be at stake. It's just a presumption. VFR is in the village forest reserve. ना आप किस चीज़ पे बात कर रहे हो? Bengal Eastern. Okay. Bengal Eastern BFR. Yeah. Okay, BFR. Yes. यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो मोस्ट ऑफ द अदर एक्ट्स जो होते हैं उस पर भी नया नया रेगुलेशंस लाया जाएगा. तो वी आर ओनली प्रोटेक्टेड थ्रू दिस बेंगल BFR, बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट ना. तो उसमें जो इनर लाइन परमिट जो ये है, देयर इज अ थिन लाइन that is only protecting us from unlike other states like Nagaland, Mizoram, that they've been constitutionally protected by the articles, but we are not. अरुणाचल बस उसी बेंगल ईस्टर्न BFR का वजह से सेफ्ट है. तो उसको कभी भी रद्द कर देगा. और अभी का समय में तो यू हैव सीन रिसेंटली 2 days बैक यूँ ही बिल्स पास किया जा रहा है विदाउट MPs को ये करके सस्पेंड करके. तो ऐसे ही एब्सोल्यूट पावर चलता रहा है. एंड द नेचर ऑफ द करेंट गवर्नमेंट ना, तो ऐसा चलता रहा है. तो हम लोग माइनॉरिटीज़ के लिए जगह नहीं बचता है, क्योंकि दे आर थिंकिंग इन देयर मेजॉरिटी पे, ना कि माइनॉरिटी पे. एंड वी आर माइनॉरिटी में से और माइनर में आता हम लोग ना. तो ये चीज़ हमारे लीडर्स भी बोल गया, आवर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ये चीज़ बोल चुका है कि आवर अरुणाचल नीड्स टू हैव मोर federalistic character, no? Whatever the central imposes, that does not mean that we'll have to follow them. We need to discuss about that law and then whether we should accept it or not. ये हमारे leaders जानना चाहिए था. Sir, this would be the last question. Yeah. How do you define Apu Appa as per your lens? Apu Appa, see, I've been telling since the last time the district magistrate had imposed. उसने हाइट्स ऑफ इम्पोजिशन ये था कि सोशल वर्क करते वक्त भी उसने आपको अप लगाया था. सो दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. उनको तो प्रमोशन मिला था IAS ऑफिसर, बट इट सिम्स ही लैक्स नॉलेज, नो. दैट इज़ द रीज़न आई फाइल अ केस अगेंस्ट हिम एज वेल. मैं एक नाबालिग बच्ची को ना, शी इज़ हार्डली 16, जुवेनाइल केस, उनको अरेस्ट करके रखता है. ऑलमोस्ट मोर देन 20 days उनको जेल पे रखता है. एंड देन उस समय को अरेस्ट करते वक्त एक फॉर्मेलिटीज़ होता है कि नाम पूछो, उम्र पूछो. तो उसमें उन्होंने वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं किया, धड़ाधड़ किसी को भी अरेस्ट करके ले जा रहा था. उससे पता चल जाता है, वी कैन गेट थ्रू इट. उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग दैट व्हेन द पेरेंट्स स्टार्टेड कंप्लेनिंग दैट माइनॉरिटी इशू, उन्होंने क्या किया, JJB से जो जस्टिस जुवेनाइल का ये एक्ट होता है, वो बोलता है, JJ एक्ट बोलता है कि व्हेन यू फाइंड सच माइनॉरिटी पर्सन यू कैन नॉट पुट हर और हिम इन द लॉकअप ना. उनको इमीडिएटली 24 घंटा के अंदर कोई चाइल्ड फ्रेंडली या तो उस पर भेजा जाता है. सबसे पहले मैजिस्ट्रेट पे, JJB बोर्ड पे लाया जाता है विद इन 24 hours. उन्होंने क्या किया, चाइल्ड फ्रेंडली बोल के पासीघाट में ट्रांसफ़र कर दिया. तो इस वजह से और एक्सटेंड होता गया उसका ये डिटेंशन ना. तो ये चीज़ें और यूनिफॉर्म सिविल कोड व्हाट आई वुड से कि in Arunachal we don't even need I've been telling that we don't even need this Apu Appa, क्योंकि Apu Appa जो क्या है कि बेसिकली उसका सारा अपना अपना लॉ से इस पे ड्रग्स का अपना केस लॉ से सब कुछ है. तो एक्स्ट्रा पावर स्टेट ने अपने आप को दिया है ताकि दे कैन एक्सरसाइज दिस पावर और आर्बिट्ररली अरेस्ट करके रख सके. आई बिन टेलिंग कि लास्ट टाइम भी कि अरेस्ट होता है तो दे आर इमीडिएटली प्रोड्यूस टू द मैजिस्ट्रेट एंड देन वी कैन मूव अ बेल पिटिशन ना. इसमें नहीं होता है. इस पे 12 दिन उसका पास पावर रहता है, किसी को मिलने नहीं देगा, वहीं अरेस्ट करके रख देगा और दुनिया का ये कोर्ट पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. तो ये चीज़ ना गलत है. बाकी जगह में हाँ, इफ़ देयर वाज अ टेररिस्ट कंट्री ना, अगर टेररिज्म पार्ट का जगह होता है तो वहाँ पे ये आपको एक पावर देता है पुलिस को, ये
इन्फोर्स करने के लिए, ताकि कुछ कुछ चीज़ को बचाया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। एंड दो सेंसिटिव एरिया ऑफ द नागालैंड एरिया ना, जहाँ पे स्पेशली इन द TLC तिराप चंगलंग ना, तो वहाँ पे क्या है कि देयर इज़ ऑलरेडी आप्सपा ना, तो स्पेशल आर्म फोर्स लगा के रखा हुआ एक्ट, तो लॉजिक नहीं बनता, देयर इज़ नो लॉजिक अपो अपो लाने का ना। तो अपो अपो मेरा जितना अभी हम दिख रहे हैं ना, जो अभी रिसेंटली जो किया गया, इट वाज जस्ट अ क्रैकडाउन। ये क्रैकडाउन किया है स्टेट मशीनरी ने पावर एब्यूज़ करके, ताकि मूवमेंट को ये तोड़ सके और आगे पॉलिटिकल इंटरेस्ट में और जो जो उसका थ्रेट होता है उसका ऊपर ये करने के लिए। Okay, sir, thank you so much.